नेपाल। तो कैसे हो आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर रहे होंगे और बच्चे बूढ़े सब देख रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत ही मज़े की होने वाली है जो मेरी तरह फूड लवर्स हैं और जो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है। वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो खाएंगे तो नहीं, बट ये है कि वो हमारी जो गपशप है उसको एंजॉय करेंगे। जी हाँ, तो जो आज वीडियो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो कुछ फूड पे हम आज रिएक्शन करने वाले हैं। देखते हैं कि नेपाल के अंदर जो स्ट्रीट फूड है वो किस तरह का मिलता है और कैसा होता है। तो जल्दी से चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि नेपाल में किस तरह का स्ट्रीट फूड अवेलेबल है। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने लगा हूँ एज यूजुअल काउंटडाउन से। 3, 2, 1 लेट्स गो। नेपाल स्ट्रीट फूड टूर कठमांडू। वेलकम। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीरियसली। पकोड़े लग रहे थे मुझे, सीरियसली ऐसा कुछ लगा कि पकोड़े हैं शायद। What is this? It was a good place, but you never found it by yourself because it was in here. Yeah, next place we're gonna eat momos. Very famous Momos. dish, number one dish in. इसका मुझे पता था कि नेपाल में ना मोमोज काफ़ी शौक से खाए जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम मैं देखूंगा। Okay, so this is the restaurant. Cheers, you can sit somewhere here. Woohoo! Actually, I was making a joke, but yeah, so this is the restaurant. Welcome. Here you can find the best momos in Kathmandu. Yeah, this is not the way to eat momos in Nepal, but That's the way I eat momos in Nepal. ये कौन सा स्टाइल है मोमोज खाने का? almost went wrong. यक। बट मज़ा ऐसे ही आता है सीरियसली, अजीब तरीके से खाने से। Can you drink this? Yeah, you can. Oh, it's sauce. अच्छा, उसने असल में सीधे एक हाथ में जो है ना कैम पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ वो प्लेट में है, तो वो कैसे खाए? तो इसलिए वो अपने जो है ना मुंह का यूज़ कर रहे हैं। ओह, थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट So we had samosas for main course, puri pani, pani puri, Pani puri. puri pani pani, whatever we had as a main as a second course, and now we get dessert. Oh shit! It's ये like तो जलेबी, इट्स jalebi, yeah, sugar. sugar. No clue what it is. What again? Sugar? Yeah, no, sugar and more sugar. That tastes good. Sweet one or follow? So this is the Soda. soda fabric. It's called the soda center. You can order so many weird soda. This is Jordan's drink. It's ginger cola. And now they have a raspberry, and you have a lime. Lemon soda. Yes. Oh yeah. Cheers. Have it. Go for it. I want to see your face when you drink it. Oh, she likes it. Okay, I'm gonna try. You have to get used to it. Yeah, you have to get used to this. Let's put it that way. You start burping along the way now. Oh, I love to burp. Oh. That's weird burping, man. Okay, and maybe I have to shit too. This is called dahi puri chaat. What? Dahi puri chaat. हमारे इधर पाकिस्तान में जो है ना इसको दही बल्ले कहा Dahi is जाता the है। yogurt.
तो यहाँ पे दही पूरी चाट है, लेकिन सेम है तकरीबन, कुछ इस पर डिफरेंट नहीं है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये गोलगप्पे कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें वो जो आई थिंक गोल सा जो पापड़ टाइप होता है ना, उसको कहा जाता है। So this is the most famous lassi place in लस्सी। Kathmandu. Oh, it's super tasty. It's a bit sweet. It's like a sweet yogurt with some nuts in it. You ready? काफी जॉली किस्म का बंदा। Chaos! The food tour is over, guys. We now gotta find a taxi back. It was really good. We had like 6 stops or something. We had like 10 foods or whatever. We had a lot of fun. And then like and subscribe below. And don't forget to ring the bell. जी तो मेरे फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? और बहुत ही मज़ा आया मुझे भी सीरियसली, लेकिन थोड़ा सा वीडियो ना छोटा था, इसलिए मायूसी हुई, बिकॉज काफ़ी कुछ होता है स्ट्रीट फूड के अंदर। इसमें कुछ गिने चुने आइटम्स थे बट फिर भी अच्छे थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे रिएक्शन दूँ ना, वो भी स्ट्रीट फूड नेपाल पे ही हो, और वो कुछ थोड़ी सी लंबी और काफ़ी डिटेल में। तो मैं ट्राई करूँगा कि कुछ इस तरह का मुझे मटेरियल मिल जाए। अगर आपके पास कुछ इस तरह का वीडियोस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं उस पर भी रिएक्शन दूंगा। तो सीरियसली मुझे तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा और दिल कर रहा था कि कुछ उसमें से खा लिया जाए, बट क्या करें कि वो वीडियो में था, रियल लाइफ में नहीं। तो इस टाइम एक्चुअल में नहीं मेरे पास अवेलेबल था। तो अगर होता तो मैं उस पर भी एक अच्छा सा रिव्यू बना के पेश कर देता वो, लेकिन फूड रिव्यू हो जाता। तो बहुत ही अमेजिंग था, मुझे तो बहुत मज़ा आया देखकर। और पर्सन जिसने ये वीडियो पूरी शूट की, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसको भी डेफिनेटली जाकर सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा जॉली किस्म का है, तो आप लोगों के उसके व्लॉग्स देखने का मज़ा आएगा। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।